I guess we are live. Yes. Hello and welcome everyone. I am Naman, your physics tutor, and I welcome you all to our today's physics class of kinematics. So, as you know, the series of classes which we are taking here on our APJ Academy channel, we are covering each and every chapter of class 11th as well as class 12th in all the subjects. So students, this will be very helpful for you because in these videos we are teaching each and every topic from the basics. Okay, we are touching the basics and then we are taking it to the next level, including your question practice and everything. So I'll quickly start with the class. I can see many of you are there. Okay, so in the last class of kinematics which we started, we read about speed and what is velocity, what is the difference between them. If you remember all these things, the formulas, the definitions, the distance upon time, and it's expressed in meter per second or kilometer per hour. Then we further discussed about average speed. Okay, and I told you the mere difference between average speed and average velocity. Okay, the form these formulas of average speed, total distance upon total time, just to brush up your last class things quickly. And then I told you what is the difference in instantaneous and average. Instantaneous is the speed at a very particular instant, whereas the average speed is defined over a long interval of time. All right, so the formula is ds by dt, double differentiation of displacement with respect to time. Then we discuss this graph. Okay, at which quantity is instantaneous and what do you mean by average. Okay, yeah, velocity and the four types: displacement, average, uniform, non-uniform. So for today's class, what we needed to start was instantaneous velocity. So I'll start by this because in the last class I told you that I will explain this again, this part of instantaneous velocity again, because in the previous classes it was covered in, like some of you were saying that you want to repeat. So yeah, तो instantaneous velocity की definition को अगर आप देखेंगे तो it is simply defined as the ratio of displacement to infinitesimally small interval of time. अब आप इसको correlate कर सकते हैं अपनी instantaneous speed से. Instantaneous speed का मैंने आपको क्या बताया था, किसी particular instant पे, यानी आपके कार के speedometer में जो speed दिख रही होती है, that is a very particular speed because it is at a specific instant. वो हर second change हो रही है. आप accelerator दबाएंगे तो speed increase होगी, brake दबाएंगे तो speed decrease होती रहेगी. Okay, so the speed in your speedometer changes really quickly. Okay, at every second the speed is changing. So that is instantaneous speed. Similarly in instantaneous velocity. So simply आप कैसे define करोगे कि at a very infinitesimally small interval of time, इतना छोटा टाइम का इंटरवल आपको लेना है जिसे आपको आप डिफाइन भी ना कर सको. आपके लिए सबसे छोटा टाइम का इंटरवल क्या होगा, 0.1 माइक्रोसेकंड या ऐसा कुछ, लेकिन उससे भी छोटा आपको टाइम का इंटरवल लेना है. एंड इन दैट इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट वाज योर डिस्प्लेसमेंट. Okay, ratio of that displacement to the very small interval of time is defined as instantaneous velocity. और अभी छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको स्पीड में मैंने बताया था, ds by dt, differentiation of displacement with respect to time. यही आपको याद रखना है. ठीक है, ds और dt का मतलब क्या होता है, बेसिकली who have not attended our basic mathematics lecture, ds और dt का मतलब होता है for very small quantities. ds is a very small quantity of s. अगर ds एक b displacement है और s भी displacement है तो basically ds is a very small part of s which is your total displacement. And dt, if t, capital T is the total time, then dt is a very small interval of time which is almost tending to zero. Okay, its value is almost approaching zero. Okay, so that is the difference between ds and dt. Direction कैसे निकालोगे, how will you calculate the direction of instantaneous velocity? I told you guys that simply whichever path you are following, just draw a tangent to your position on that path and that direction of that tangent will give you the direction of your instantaneous velocity. Okay, आपको मैंने example से भी समझाया था सेम चीज कैसे tangent draw करना है and all other things. Instantaneous rate of change of position with respect to time, that is velocity at an instant. What is instantaneous velocity? Instantaneous rate of change of position. By how will you define that an object has some velocity? Only when it is changing its position with time. तो वो वही बात कह रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से पर्टिकुलर instant by instant, time is second by second, okay, minute by minute, when it's changing its position with respect to the time, it is said to have some instantaneous velocity.
that is defined as the instantaneous velocity of that object. Okay, now instantaneous speed of the particle is magnitude of instantaneous velocity. I always told you that speed and velocity are same in magnitude. Okay, it's just that velocity has an added direction to it. Velocity, since velocity is a vector quantity, क्योंकि velocity एक vector quantity है, तो velocity के पास एक added direction extra होता है, वरना velocity और speed का magnitude जो है आपको same मिलेगा. तो velocity का जो magnitude है that is speed only. If the motion of an object is along a straight line in a same direction, then the magnitude of displacement is equal to the total path length. This we also covered. Okay, that since you are not changing your direction and you are moving in a straight line, so the total distance traveled will be equal to the total displacement, and in this case your velocity and speed will be equal because there is no change in the distance and displacement of the particle. Distance और displacement अगर same है तो speed और velocity में भी change नहीं आएगा because speed is distance upon time और velocity क्या है, displacement upon time. दोनों ही same है, दोनों के आंसर same आएंगे. ठीक है, चाहे मैं 1/2 लिखूं या 2/4 लिखूं, आंसर दोनों में 1/2 ही आएगा. ठीक है, that's what I want to say. And in that case, magnitude of average velocity is also equal to average speed, because what we talked about average is what, total distance upon total time is your average speed, whereas average velocity क्या होता है, total displacement upon total time. अब now when I'm saying distance and displacement are equal, then automatically and obviously velocity and speed in average values will also be equal. चलें आगे. Okay. Just now I have defined average velocity for you. Yeah, don't worry, we'll do some questions. Definitely, in the last class, like in the last class, we did some questions. I'll try to do, first I'll try to finish your syllabus. Okay. And maybe when we discuss the equations of motion, then we can take up the questions, because this is all related. Your average velocity, average speed, distance and displacement, and all this is related. Okay, so there won't be any difference. It will be a benefit to you only if you learn acceleration and other things, and then we will discuss the questions. So that will be an added benefit to you. Okay, now coming back to our topic, average velocity. Now average velocity is defined as total displacement of a particle divided by its total time taken to cover that displacement. याद रहेगा, सिंपल फॉर्मूला है. एवरेज की बात जब भी करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आगे टोटल लगा देना है, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. फिर एवरेज मैंने आपको क्या बताया था, एक लंबी टाइम इंटरवल के लिए, जब एक लंबी दूरी पार्टिकल तय करता है, उस लंबे ड्यूरेशन के लिए, लंबे ट्रैवल के लिए हम एवरेज से डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी. ठीक है, छोटी दूरियों के लिए तो हम इंस्टेंटेनियस ही बता देते हैं, बट आप कोई बहुत लंबा डिस्टेंस जा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, सो फॉर देम वी यूज़ द वर्ड एवरेज. तो एवरेज जब भी है फॉर्मूले में अपने आप समझ लेना कि टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कहीं होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा. ओके, नाउ व्हाट एल्स इट सेज, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द टाइम इंटरवल in which it is calculated. Average velocity का डायरेक्शन देखो, उन्होंने बताने का तरीका बताया हुआ है कैसे आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट. कितना आसान है इसे याद रखना. आपको डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ और याद रखना ही नहीं, आपको बस क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, बेसिकली पार्टिकल लास्ट किस तरफ गया था, लास्ट जब मोशन आपने ऑब्जर्व किया इन विच डायरेक्शन द पार्टिकल वाज मूविंग, दैट एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन विल बी ऑफ एवरेज वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी यानी लास्ट नोन लोकेशन होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी एवरेज वेलोसिटी भी होगी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफ यू स्टार्ट अ ट्रिप ओके फ्रॉम पॉइंट एंड यू अगेन कम बैक टू द पॉइंट, सपोज यू मेक अ सर्कल. आप सर्कल कैसे बनाते हो, आप ए पॉइंट स्टार्ट करते हो एंड यू गो अराउंड एंड यू कम बैक अगेन एट पॉइंट ए. So that is a circular motion. In that case, what is zero? Displacement is zero. Why? Because the distance between the initial and final points are very less. So displacement is zero, and that is why your average velocity will be zero. Not average speed. Average velocity will be zero. So that is the difference which you have to keep in mind. कि circular motion करते टाइम हमारी average speed तो zero नहीं होगी, लेकिन हमारी average velocity zero होगी, because हमारा net displacement या total displacement zero आ जाएगा. Got it? Okay, moving forward, uniform velocity and uniform speed. So what do you, velocity and speed you already know.
सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलर. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा. ठीक है, दिखने में एक जैसा, आप समझ सकते हैं इसको ऐसे, विच की सेम आप जिसको बोलते हो सेम. ठीक है ना. सो सेम एंड यूनिफॉर्म एंड सिमिलर, ऑल दीज आर योर सिनोनिम वर्ड्स. इनका एक ही मतलब होता है. नाउ अब इसको फिजिक्स के टर्म में देख लेते हैं कि कैसे हम यूनिफॉर्म वर्ड को किसी पैरामीटर के साथ जोड़ते हैं तो डेफिनेशन में क्या चेंज आता है. वी विल सी हाउ द डेफिनेशन चेंजेस ड्यू टू दिस. सो द फर्स्ट थिंग, इफ यू सी इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट they are writing is the equal displacement occurring in equal time intervals is called uniform velocity. Now I told you the meaning of the word uniform is equality. It's about equality. Okay, so if I am covering equal displacement because I am defining uniform velocity. So what will I talk about? If I am talking about velocity, definitely I have to measure displacement and the time taken by the particle to cover the displacement. So if I want to maintain a uniform velocity, that means that I have to cover equal displacements like 2 meters, successive 2 meters. In first 2 seconds I walk 2 meters, then the next 2 seconds I also walk 2 meters, in the next 2 seconds also I walk 2 meters. So in total 6 seconds I have walked how much? 6 meters. So that is said to be uniform. If you're not able to get it, let me draw it with an example as well. Let me draw it for you guys. Suppose you were standing at this point A. Okay, and this is point B, and the distance between them is, let's say 10 kilometers. Okay, the total distance between these point A and B is 10 kilometers. But if I say that I'm on a bike and my bike is covering 2 kilometers per second, 2 kilometer per second, this is a very hypothetical situation, but okay, 2 kilometer per second is my bike is covering. So in the first 2 hours I will cover 200 meter. In the next 2 hours, how much I'll cover? 400 meters, and so on. दैट इज योर यूनिफॉर्म थिंग. यूनिफॉर्म मतलब क्या है? आपकी सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स सिमिलर हैं और इक्वल टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म कर रही हैं. यानी हर एक डिस्प्लेसमेंट आपकी जो सक्सेसिवली आ रही है वो 30 की है या उससे ज़्यादा की है. एंड अच्छी बात यह है कि अवेल में प्रेशर फील नहीं हो रहा. नाउ मूविंग बैक, यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑल्सो ऑन द सिमिलर लाइन्स. एक ही चीज़ है, ये कोई फर्क नहीं है. वेलोसिटी में क्या आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो इक्वल टाइम में. यूनिफॉर्म स्पीड में आप क्या कवर कर रहे हो? इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस. अब कभी कोई कंफ्यूज नहीं होगा ना इसमें, सर यूनिफॉर्म मतलब कैसे आएगी यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड तब आएगी जब आप हर घंटे में 10-10 किलोमीटर कवर करेंगे. ठीक है, इन द फर्स्ट आवर आप 8 बजे चले तो आप 8 से 9, ठीक है, 9 बजे तक आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला. फिर 9 से 10 आपने फिर से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. फिर 10 से 11, फिर से 10. सो इन एवरी सक्सेसिव 1 आवर यू आर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर. सो योर स्पीड इज कॉन्स्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर. तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड. एक जैसी स्पीड समय के साथ, बढ़ते हुए समय के साथ. ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल. मतलब समय तो बढ़ रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग बाई इक्वल इंटरवल्स. ओके, 1 आवर ईच. ओके, बट आपका डिस्टेंस दैट यू आर कवरिंग इज नॉट चेंजिंग. तो यू आर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, आई होप आप कभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें. सॉरी. On the other hand, what is non-uniform now? Now, non-uniform velocity, non-uniform speed, and other things. When an equal displacement occurs in the same time interval, it is called non-uniform velocity. Now, what is unequal? Suppose, let me get back to that page. Suppose ये A से B again you wanted to go, and the distance was now 20 kilometers between A and B, and it took you 10 hours to reach
from A to B. Okay, from A to B, it took you 10 hours. So in the first hour, okay, in the first 1 hour you traveled 4 kilometer distance. In the next 1 hour you traveled 1 kilometer distance. In the next 1 hour you traveled 8 kilometer distance. How much you have traveled by now? How much you have traveled? Yes, 13 kilometers you have already traveled. In the next 1 hour you travel what? Let's say 3 kilometers. And the next 1 hour you travel 1 kilometer. So you see that after every successful 1 hour, the distance which you are covering is getting changed. पहले एक घंटे में आपने कितना distance travel किया? 4 kilometers. Then in the next 1 hour, the distance covered by you was 1 kilometer. Subsequently followed by the next 1 hour, the distance covered by you was 8 kilometers. So after every successive hour, you are covering a different distance. Okay, a different distance. Now this is not same, it is different. So your speed will, for first hour will be 4/1. For second hour your speed will be 1/1. Now this is 1/1 is what? Distance in kilometers upon time in hours. Again, for the third hour your speed will be what? 8/1, like this, okay. You can yourself see that the speed is not equal. If the speed is not equal by the or you should say through the same time intervals, then the given speed to you is नॉन यूनिफॉर्म. अब ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे ना, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का मतलब क्या, ये फील हो गया ना कैसे यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म जब स्पीड बोलते हैं तो करते क्या है, हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं सेम टाइम इंटरवल में. सर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सर कभी तो स्पीड, अच्छा ऐसा भी हो सकता है दैट फॉर फर्स्ट 3 hours 1 hour 1 hour and 1 hour, out of these 10 hours, in the first 3 hours your distance covered was 2 kilometer 2 kilometer 2 kilometer each hour. But if in the next 1 hour, if it is 10 kilometer, then also your speed is not non-uniform. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही नॉन यूनिफॉर्म होके चलेगी. अगर टोटल टाइम इंटरवल मैं पूछ रहा हूँ 10 hours में कि 10 hours से मुझे स्पीड डिफाइन करो कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 hours आपकी स्पीड कैसी रही, और उसमें स्टार्टिंग के 6 hours तक तो योर स्पीड वॉज, और ये स्टार्टिंग के 4 hours तो योर स्पीड वॉज यूनिफॉर्म, तो यू वॉन्ट से दैट माई एंटायर स्पीड वॉज यूनिफॉर्म. नो, if the speed has, if the distance covered has changed in the subsequent hour, then your speed will not be called as uniform, it will be called as non-uniform only. तो ऐसा कभी you should never get confused कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ पार्ट में तो वो यूनिफॉर्म से चले और कुछ पार्ट में नॉन यूनिफॉर्म से चले. हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट उस केस में द फाइनल आंसर विल बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, बिकॉज फॉर हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट ए से बी पहुंचने तक, थ्रू एंड थ्रू, पूरे थ्रू एंड थ्रू ए टू बी, यू शुड बी हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ऐसा नहीं कि आपने बीच में तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया सेम टाइम इंटरवल से, बट नेक्स्ट टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस बढ़ गया या कम हो गया. नॉट लाइक दैट, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. Okay, same with uniform, non-uniform speed, non-uniform velocity, speed, both are same things. You can read the definitions. Okay, let me move on to the third point. Third point क्या कह रहा है, देखो, when a body travels equal distance in equal intervals of time but changes direction, then the body is said to have non-uniform velocity. Now this is very interesting point जो आपको याद रखना है. ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, आपने तो मुझे अभी तक सिखाया नॉन वेलोसिटी के बारे में और यूनिफॉर्मिटी के बारे में कि अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है तो हम यही बोलेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. यही तो आपने सिखाया. मैंने बोला था डिस्टेंस हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पीड को डिफाइन करने के लिए. डिस्प्लेसमेंट किसके लिए यूज़ करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए. एंड सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ओवरऑल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी. यानी कहने का मतलब वेलोसिटी होती है 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, ये वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेयर स्पीड इज स्पीड. ओके, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज जस्ट स्पीड. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस कि सर ऐसा ये डिफरेंस क्यों है. ये डिफरेंस इसीलिए है कि अब जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफाइन करोगे. एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी चेंज नॉट नेसेसरी बाई ओनली चेंजिंग दी velocity can be changed not necessarily only by changing the displacement of the particle. It can also be changed by changing the direction in which the particle is traveling. तो आपको कभी वेलोसिटी बदलनी हो पार्टिकल की तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्लेसमेंट में ही चेंज लेके आओ, आप डायरेक्शन बदल दो.
Okay, the particle first was traveling after in every 2 hours it was traveling 4 kilometer, but after 4 hours we saw that the particle traveled for 2 kilometers, but it was in the opposite direction. So the velocity is automatically non-uniform now. Okay, because there is a change in direction. So always remember this difference in speed and velocity. That in order for velocity to become non-uniform, you can also make it non-uniform by simply changing its direction. No need to change its magnitude. Okay, types of motion. This is the interesting part. What are types of motion? First one being uniform motion and the next one is non-uniform motion. देखो, ये मोशन भी, वेलोसिटी भी, स्पीड भी सब इतनी देर से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पे चल रहा है, तो आई होप आपको ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बेसिक डेफिनेशंस, ये वाला गेम तो क्लियर होगा. ठीक है, कि हम किस चीज़ को यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, किस चीज़ को हम नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, क्या सिमिलैरिटी है यूनिफॉर्म में, विच थिंग इज थ्रू आउट. यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी थ्रू आउट सेम, अगर एक चीज़ किसी एक पर्टिकुलर तरीके से हो रही है, एक प्रोटोकॉल से हो रही है, तो थ्रू आउट उसी प्रोटोकॉल से होगी. दैट इज योर यूनिफॉर्मिटी. ओके, आपने जनरली भी सुना होगा. एंड नॉन यूनिफॉर्म इज वो एक चेंज इन ट्रेंड्स, पैटर्न्स चेंज आ जाता है जो सोसाइटी के अंदर, ट्रेंड्स के अंदर. दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्मिटी. सिंपली कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी चेंज हो जाए, विद टाइम चेंज हो जाए. ओके, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म. Now, in terms of motion, uniform motion is defined as a body is said to be in uniform motion when it moves with a constant or uniform speed at a certain distance in an equal time interval. Very very simple definition. अगर मैं आपको दूँ uniform motion की, तो all the objects which are possessing uniform speed, okay, all the objects which are possessing a uniform speed are also possessing a uniform motion. जिन भी objects के पास uniform speed है, वो automatically uniform मोशन कर रहे हैं. बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल अबाउट हाउ मच डिस्टेंस यू मूव एंड हाउ मच टाइम इंटरवल. So if you're having the same vehicle and you're maintaining the same speed, so you will bloody damn cover the same distance automatically. You will cover the same distance automatically. Okay, so you can see the example. Aeroplanes fly at a constant speed in air. The velocity of uniform motion remains constant there. So when aeroplanes fly, they fly at a constant speed. They are not changing their speed in the air. Okay, you will never see an aeroplane getting accelerated. Okay, and after all, when you will see the aeroplanes are landing, they usually control the speed, but they also change the direction. Okay, so their uniformity is lost, because when I talk about uniform velocity, what two things should be in my mind? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और डायरेक्शन भी सेम रहे मेंटेन. अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ गया, देन ऑल्सो द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आप वेलोसिटी के टर्म में बोलोगे, तो अगर आप डायरेक्शन में चेंज कर दोगे, तो मोशन ऑटोमेटिकली नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो आप ये एग्जाम्पल्स से अंडरस्टैंडिंग अपनी इन्हांस करो कि एरोप्लेन्स को एग्जांपल बनाए, क्योंकि व्हेन दे आर फ्लाइंग इन एयर, देन दे आर फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन का मेन क्राइटेरिया क्या है? मेन क्राइटेरिया ये कहता है, इफ अ बॉडी इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट इज फॉलोइंग यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म स्पीड कैसे आएगी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल. एवरीथिंग इज रिलेटेड. यू कैन सी कैसे मैंने जो पहली क्लास में पढ़ाया था, equal in distance and equal meter of time, that uniform speed and average speed and uniform motion, everything is connected step by step. Okay, non-uniform motion is exact opposite. A body is said to be non-uniform motion when it moves with a variable speed in equal time intervals at different distances. क्लियर है? ये डेफिनेशन भी इसको थोड़ा सा रिफाइन करके बता दूं. नॉन यूनिफॉर्म कब बोलोगे किसी मोशन को? जब वो वेरिएबल स्पीड से ट्रैवल करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लाइक पहले 1 घंटे में, तो if a car is traveling, its speed was 20 km per hour, then in the next 1 hour the speed of the car increased to 30 km, then in the next 1 hour the speed of the car increased by 30 kilometers again, and the speed became 60 kilometers. Okay, so you can see by each equal interval of time, equal interval is of 1 hour, so after each equal interval of time, हर एक घंटे बाद कार की स्पीड 20 से 30, 30 से 60 ऐसे चेंज हो रही है. तो ये जो चेंज आ रहा है कार की स्पीड में, ठीक है, इसका मतलब इस स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड है. वेरिएबल इज ऑल्सो मीन्स चेंजिंग स्पीड. तो अगर स्पीड वेरिएबल हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो है मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द
stick of the टाइप ऑफ स्पीड दैट द पार्टिकल इज पोजेसिंग। अगर पार्टिकल की स्पीड ही नॉन यूनिफॉर्म है तो मोशन तो अपने आप ही नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एग्जांपल दिया उन्होंने, एक बाइक ट्रेवल्स इन ट्रैफिक। जब बाइक ट्रैफिक में होती है तो कभी जैसे ट्रैफिक खुल जाएगा तो द बाइक विल पिक अप द स्पीड, बट इफ द ऑब्जेक्ट्स आर और द व्हीकल्स आर वेरी वेरी नियर टू ईच अदर इन अ वेरी कॉम्पैक्ट सिचुएशन, देन द बाइक विल मूव वेरी वेरी स्लोली एंड समटाइम नॉट इवन विद द एक्सीलेटर यू विल move the bike with your legs only. So that is the difference. Okay, the velocity there is non-uniform, and so the bike in traffic possesses a non-uniform type of motion. Moving to my next slide, ये देखो ग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, अब ग्राफ से आपको डील करना है। काइनेमेटिक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, इज ऑल अबाउट डीलिंग ग्राफ्स। ओके, सो I'll definitely take your one class on graphs. Okay, and I'll plan it accordingly after you have done a couple of topics and you have a good understanding about how the questions are solved. Then we'll take on graphs is are very interesting. First of all, I'll tell you, graphs बहुत interesting होते हैं। Graphs are easy to solve if you know the concept. Graphs are solved within 10 seconds or 15 seconds. आप इतनी quickly graph को solve कर सकते हो, and graphs are generally very easy numericals. Okay, than calculating the numericals. The graphs are very easy numericals to solve. Okay, graph reading and all is very easy. It takes a very less time and it will fetch you the equal amount of marks. So that is the difference. Okay, so if you are ready, we can start with the graphs now. If you see here, I have drawn a graph between distance and time. Okay, distance is on the y-axis, time is on the x-axis, and you see this is a straight line graph. Now what does this straight line graph convey? This straight line graph between distance and time convey that the particle of which the graph is drawn is following a uniform motion. जिस भी पार्टिकल का मैंने ये ग्राफ बनाया है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है सर। तो उसका मतलब क्या है सर? स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट ग्राफ है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब आपको ये देखना हो तो आप कैसे देखोगे? मैंने कहा हाँ दिखाओ। देखो सर, 1 मिनट पे पार्टिकल वाज एट 10 मीटर्स। मैंने कहा ओके, 1 मीटर एट 1 मिनट द पार्टिकल वाज एट 10 मीटर्स। सर आफ्टर एट 2 मिनट्स द पार्टिकल वाज एट 20 मीटर। मैंने कहा ओके, आफ्टर आफ्टर 1 मिनट मोर, सो एट 2 मिनट्स द पार्टिकल वाज एट 20 मीटर। तो 2 मिनट पे अगर द पार्टिकल इज एट 20 मीटर तो सर 1 मिनट में कितना चला? मैंने कहा if it is at 20 meter at 2 minutes and it was at 1 meter at it was at 10 meters at 1 minute, so it has moved 10 meter. Okay, उसने कहा now sir observe that at 3 minutes the particle is at 30 meter. मैंने कहा yes, so from 20 to 30 it has moved in 1 minute. मैंने कहा yes, so how much distance? 10 meters. So each successive minute the distance is increasing by 10 minutes. So this is a classic example that the particle is following or a particle is having uniform speed. classic example है ये ग्राफ। ठीक है, now साइड में कुछ डिडक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, वो डिडक्शंस आप देख लीजिए। what are the deductions which you can make from this or inferences which you can make from this graph? First of all, there is no change in the velocity. velocity में कोई change नहीं हो रहा है। velocity में change क्यों नहीं हो रहा भाई? if I am traveling equal distances in equal interval of time, so my speed remains constant. Okay, my distance traveled remains constant, so my displacement remains constant, so there will be no change in velocity. Second point, no change in acceleration. ओहो, acceleration का मतलब क्या होता है? change in speed और change in velocity. acceleration का मतलब ही होता है change in speed. अब मैंने बोला speed ही तो uniform है। I am saying speed ही uniform है, speed is not changing. तो acceleration whose whole meaning is that calculate the change in speed, that will automatically be zero, so there will be no change in acceleration. Acceleration will remain zero in this case. Okay, no change in speed. Yeah, that's what we all know. There is no change in speed because the distance traveled in equal intervals of time is equal. Fourth is no change in direction. Since the particle is moving in a straight line, we can say that there is no change in the direction of the particle. Okay, so two more things we can say from this graph, that this graph is having a constant slope. Now what is the slope? And I'll give you a brief idea about the slope today. Very very brief idea. What is slope? Suppose this is the graph, ये जो graph है आपका distance time के बीच में, I want to calculate its slope. So always remember that slope is the angle made by the graph with the horizontal axis in anti-clockwise direction. So ये graph है, this blue line is your graph. Okay, this is your graph line. This is your graph line, and this angle theta is your slope. If I want to make it
more clear to you, let me use a page here. See, this is x-axis, this is your y-axis. This at y-axis I had distance covered, so 10, 20, 30, 40, 50, 60 and so on. And on the x-axis I had time, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minutes. So this is your time. And if I say that this graph starting from 0 is a straight line, okay, then this is your slope, this angle is your slope. Okay, this is the graph. X, Y and a straight line. If I want to calculate the slope will simply be angle made by this graph line with the horizontal axis in anti-clockwise direction. This theta will be your slope, and to be precise, tan theta will be your slope. The tangent theta of this angle will be your slope of the graph. Okay, now coming back to our topic, that a graph, this you have to remember, okay, this you have to remember very strictly, that a graph drawn between distance and time, okay, तो स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, जो ऐसा ग्राफ जो मैंने डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनाया है, ऐसे ग्राफ का स्लोप मुझे क्या बताएगा, उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में. ठीक है, अब जैसे इस केस में स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब जैसे जैसे ग्राफ या टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एंगल जो है it's not changing the angle made by the graph line with the x-axis is not changing. Why it is not changing, that also I can show you. Just a minute. Okay, why it is not changing, because if you see it like this, इस ग्राफ को अगर आप ऐसे देखो तो आपको समझ में आएगा. This is x, this is y, and this is a straight line. Okay, I said this angle is theta made at this point. What about the angle made by this point q on this line? If I say this whole is a straight line, then this angle will be constant, because if you shift this x-axis above right here, then this angle will also be theta. This angle at point R will also be theta. So if you want to check that how it is making equal or constant slope, you can simply shift your x-axis parallel to the point at which you want to calculate the slope, and you can check the angle. And always remember the direction for checking the angle made with the x-axis is anti-clockwise. Which one? Anti-clockwise. You know what is anti-clockwise? This is anti-clockwise, this is clockwise. I think you must have read this, तो हर बच्चे ने पढ़ा होगा. Okay, moving on to the next graph what I have for you. Next graph is of non-uniform motion. Next graph is of non-uniform motion. Sir, looks terrible. Yeah, this looks terrible, but it's not that terrible. Simply आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है कि this graph is not straight line. पहले पिछले वाले की तरह, ठीक है, पिछले वाला जो ग्राफ था वो यूनिफॉर्म मोशन का, दैट वाज स्ट्रेट लाइन. दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन. व्हाई? बिकॉज ग्राफ में ही लिखा है कि नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, दैट द पार्टिकल इज हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम और डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. Okay, so when I draw a non-uniform graph between distance and time, so it will show a curve line, a curve graph line. तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? कर्व ग्राफ लाइन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनने वाले का स्ट्रक्चर कैसा आता है? That's a curve graph line. Okay, अब अलग अलग हो सकते हैं, but just to show you the example image is here.
what few things you have to deduce from this graph of non-uniform motion. First of all, you have to deduce that if the particle is following a if a particle is having this kind of graph, a broken graph, or not broken, it's a curvy line graph, then definitely that the speed of the particle is not constant, the speed is not uniform, the speed itself is changing. That is the first inference you have to make from this graph of non-uniform motion, that the speed of the particle is changing continuously. Or if not speed, okay, if not speed, if you are saying that no, speed was not changing but still the graph is non-uniform, then what must have changed? डायरेक्शन मस्ट हैव चेंज, क्योंकि ऐसी दो ही चीजें हैं जो नॉन यूनिफॉर्म बना सकती हैं मोशन को. ठीक है, एक तो या तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी, मतलब क्या, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बट इफ you travel with uniform speed and still your graph is non-uniform, then the only meaning conveyed to you is that the direction must have changed, because if you change the direction of velocity, then also the velocity will change. It's a vector quantity, so if the velocity is changing, then how can the motion be uniform? How can the motion be uniform if the velocity is changing? Okay, so either change in speed is there in non-uniform motion graph, either the change in direction is there, or there can either be a change in both of them. Okay, and as you can see that the angle made on different points on this line, angle made by different points on this line, let's say this angle made by this P point was theta, but angle made what at this point Q will be somewhat theta 1 greater than, okay, theta. So since the angle made by the x-axis is changing continuously in this type of graph, the slope will also be variable. The slope will not be constant. When do we call the slope is constant? Slope हम constant तब बोलते हैं जब हमारा एंगल एक्स एक्सिस और ग्राफ की लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा हो, ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कांस्टेंट रहे. ठीक है, वो एंगल चेंज नहीं हो रहा, वो ग्राफ के किसी भी पॉइंट से आप एंगल मेजर करो तो सेम एंगल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर कांस्टेंट स्लोप. वेरिएबल स्लोप मतलब जो आपका एंगल कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है विद टाइम, जो है आपका एंगल ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ योर्स इज चेंजिंग विद टाइम, दैट इज योर वेरिएबल्स, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल स्लोप. ठीक है, और स्लोप वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल ही होगी. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, एक ही ना मतलब नॉन यूनिफॉर्म होने का, वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी होगी. Okay, I guess you guys are clear with this. We can move ahead. Acceleration, a very important topic of today's class. Acceleration. Now, what is acceleration? A few moments back, I told you what is acceleration. A pretty simple definition, which you have to remember. छोटी सी definition है acceleration की, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है बहुत लंबी छोटी definition हो कुछ और आपको क्या है definition. The rate of change of velocity of a body during the motion is called acceleration. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, रफ्तार में समय के साथ कितना चेंज आया, दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या बता रहा है भाई, आपकी वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आया. आप कोई पर्टिकुलर मोशन करने निकले थे, आप मान लो घर से चले तो पैदल, लेकिन आगे जाके आपको दोस्त मिल गया जिसने बाइक पे आपको लिफ्ट दे दी, सो योर स्पीड इंक्रीज्ड, सो दिस चेंज इन स्पीड वाज योर एक्सेलरेशन. ओके, दिस चेंज इन स्पीड वाज योर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड और वेलोसिटी को मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, मैंने आपको दोनों टर्म्स से इंट्रोडक्शन करा दिया है, दोनों के बीच में डिफरेंस को बता दिया है. सो आई विल यूज दीज टर्म्स इंटरचेंजेबली एंड एवरीवन विल बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड एट व्हाट पॉइंट आई एम रेफरिंग टू वेलोसिटी and at what point I'm referring to speed, because you should know at what point I'm talking about change in direction and at what point I'm talking about change in speed or magnitude. Okay, ये चीज़ आपको याद रखनी है सबको. तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कोई नहीं कंफ्यूज नहीं होगा ना. आपकी स्पीड में, किसी भी पार्टिकल की स्पीड में टाइम के साथ मोशन करते हुए कितना चेंज आया, उसका कौन बताता है, एक्सेलरेशन. ओके, बाकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन सब लिखी हुई है, यू कैन रीड आउट फ्रॉम द नोट्स. सो एक्सेलरेशन अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ठीक है, अब एक्सेलरेशन ऐसा तो है नहीं भाई वेलोसिटी में चेंज आया कुछ ड्यूरिंग द मोशन, अब कौन सी डायरेक्शन में चेंज आया, अगर आप यही डिफाइन नहीं करोगे तो क्या फायदा ऐसे चेंज को डिफाइन करने का. दे शुड बी प्रॉपर डेफिनेशन. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट शुड बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन डायरेक्शन. Formula you can learn, change in velocity delta v upon time taken t. Okay, and the unit will be meter per second square or km per hour square. क्या टाइम की
जहाँ पे आप टाइम लिखते हैं मीटर पर सेकंड लिखते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं, किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, वहाँ जहाँ भी आप टाइम लिखते हैं वहाँ पे आप इसका टाइम वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड km प्लस km by h square. That will be your units for acceleration. Nobody will forget and do mistakes in the units. I lot of times मैंने इतने questions देख लिए कि acceleration calculate करने कोई बहुत ही complex question आता है, लेकिन options में ना आपको इतने पास पास ऑप्शन लिए होंगे कि आप सॉल्व करके निकाल नहीं सकते, बट एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें करेक्ट यूनिट दी होगी विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द करेक्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाकी अदर ऑप्शंस में आपको यूनिट दी होगी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, लाइक दिस, बट देयर विल बी सिंगल ऑप्शन जहां पे आपको ये मीटर दी होगी एंड यू विल गेट टू नो विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट क्या आंसर है, जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट्स कि आपको ये कौन सी रियल यूनिट है. तो यूनिट शुड नॉट बी फॉरगेटन, फोकस ऑन द यूनिट्स, एवरीथिंग, स्पीड का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट, डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एंड एक्सेलरेशन की यूनिट्स, दीज आर बेसिक पैरामीटर्स ऑफ अ मोशन. तो आपको इनकी यूनिट्स में तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ऑल द यूनिट शुड बी बाय हार्ट. Now, average acceleration and instantaneous acceleration. Again, acceleration is divided into two types. Average और instantaneous का मतलब यहाँ भी सेम है. There is no change in the meaning of the terms. Instantaneous का मतलब यहाँ क्या है? Instantaneous acceleration is the acceleration of the particle at a particular specific interval of time. And average acceleration here again is defined for a particle over a certain time interval. Okay. एक बड़ी किसी बड़ी जर्नी के लिए अगर आप एक्सेलरेशन डिफाइन करोगे तो दैट विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन. सो देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, द ओनली थिंग विच चेंजेस इज द पैरामीटर. पहले एवरेज वेलोसिटी था, नाउ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ ओके, कमिंग बैक टू द topic, how will you define acceleration? Simple formula. Acceleration is defined as change in velocity delta v upon time taken to change for that change to occur, t. Okay, delta v upon delta t you can simply say, and change is what, final velocity minus initial velocity, and similarly t time final minus time initial. ठीक है, चेंज निकालने का तो आपको पता ही है, a minus b upon, है ना, टोटल टाइम occur for that change to happen. तो that is the same formula here. Now, direction of average acceleration. How will you calculate the direction of average acceleration? Now, these are important terms. I hope you all are thorough with things for now. Okay. चलो गुड, आपको अब तक चीज़ समझ में आ रही है. डायरेक्शन कैसे निकालोगे एवरेज एक्सेलरेशन का? अब डायरेक्शन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है एवरेज एक्सेलरेशन की. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का चेंज हो, जैसे अपन उसका निकालते थे ना वेलोसिटी का डायरेक्शन, कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. सेम वैसे ही केस इसमें एक्सेलरेशन में, कि जिस डायरेक्शन में आपको चेंज आता दिखे वेलोसिटी में, जिस भी डायरेक्शन में आपको दिखे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. अगर सपोज करो, आप इसका एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. आप कार से सीधा जा रहे थे, ठीक है, एंड आप जब गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी को निकालते हो जब आप पार्किंग से, तो यू नो मूव अ कार एट अ वेरी स्लो स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर, प्रोबेबली लेस देन दैट. ठीक है, बट व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे योर कार मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर. Okay, so you remove the car from parking, then you move straight onto the main road, and then at the main road your speed increased from 10 kilometer per hour to 40 kilometer per hour. So in a single direction, in a straight line direction, there was change in your velocity. 10 kilometer से 40 आ गया, 30 kilometer per hour का change आ गया. Okay, so that change in your velocity is the direction. So that change in your velocity is along a certain direction, और उसी direction में आपका acceleration हुआ है, because जिस डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही है करेंटली, है ना, विद इंक्रीज स्पीड, उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, तभी तो मतलब एक्सेलरेशन का. ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना एक्सेलरेशन की. जिस डायरेक्शन में आपको दिखे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में सर एक्सेलरेशन भी होगा. चलिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी to infinitesimally small interval of time. ये ही definitions again and again is getting repeated. Instantaneous के लिए you reduce the time interval to a very very short interval of time, because very very specific acceleration you have to tell. जब आपको instantaneous acceleration बताना होता है, आपको बहुत specific acceleration बताना होता है particle का, so you will reduce your time to a very small interval. Okay. Direction of
instantaneous acceleration is along the direction of change in velocity vector. This we have already done. Formula you have to see now. इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आपने हर जगह देखा है, अभी स्पीड में देखा, वेलोसिटी में देखा, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, यहाँ पे डी वी बाई डी टी, ठीक है। बिकॉज जब हम स्पीड की वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम किस में चेंज देख रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में कितना चेंज आया। सो द चेंज इन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। यही सेम चीज एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन इज टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी, सो डी वी, because v is defined as velocity, v is symbol for velocity, so dv, change in velocity upon dt. dt is a very small interval of time, okay, so dv by dt equals to tan theta. Yes, this tan theta is the slope जो मैंने आपको बताया था, if anybody remembers. ये चीज हम ग्राफ में और डीपली करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस व्हेन आई टेक अप द ग्राफ्स, दिस थिंग ऑफ हाउ डू वी कोरिलेट द फॉर्मूलाज विद योर स्लोप। आप स्लोप देख करके कैसे बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या चेंज है, वेलोसिटी में क्या चेंज है, किस तरह का मोशन है, ये दीज थिंग्स विल अगेन बी ब्रश्ड अप। आज भी बता रहा हूँ, इन द फर्दर क्लासेस दीज थिंग्स विल अगेन बी ब्रश्ड अप, ओके। फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, dv by dt है ना, एंड इज इक्वल टू दी स्लोप tan थीटा। स्लोप ऑफ विच ग्राफ, नीचे बताया हुआ है मैंने, वो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा, उस वाली ग्राफ लाइन का tan थीटा यानी स्लोप जो होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताएगा उस पार्टिकल का। किसी पार्टिकल का आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, ठीक है, और उस आपको देख करके बोले कि इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ किसी पॉइंट पी पे, तो आप उस पॉइंट पी का स्लोप निकाल लेना। स्लोप इज नॉट नथिंग बट tan थीटा, तो जो स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ at any given time will tell you the instantaneous acceleration, okay। I hope ये simple चीज क्लियर हो गई होगी सबको। all right, perfect। equations of motion पे अभी हम आ गए हैं, equations of motion। okay, we have a lot of time for doing questions as well, okay। so yeah, I'll wind up with the equations of motion today। I'll give a brief about the equations of motion, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं आपको better समझ में आएंगी when you will be dealing with the questions। so in the next class we'll be doing a lot of questions, okay। so the first one, if you see, is v is equals to u plus at. Now what is v, what is u, and what is a, and what is t here? I will just orally tell you today. I'll just orally tell you, and in the next class we will do this in detail. Now v is your final velocity of a particle. V is your final velocity of the particle. U is your initial velocity of the particle. A is your acceleration, and t is the time taken, okay। so the first equation of the motion says final velocity is equal to initial velocity plus acceleration multiplied with the time of the particle. First equation is to calculate the velocity of the particle if acceleration and time are given to you. Out of the four things, any three things will be given to you, and the fourth thing will be asked. So we'll put the values and you will get the answer. Very simple questions on these. Okay, moving on to the next question. S is equals to ut plus half at square. Okay, now this equation helps to calculate displacement, where s क्या है यहाँ पे, s is the displacement of the particle। तो ये equation आपको displacement calculate में हेल्प करता है कि सपोज को आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दी है और टाइम टेकन दिया है, पार्टिकल कितनी देर मोशन में चला, कितनी वेलोसिटी शुरू किया था, कितना एक्सेलरेशन रहा, ये सब चीज़ें दी हैं, और आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बता दो कि कितने डिस्टेंस चला होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की हुई होगी अगर इस वेलोसिटी से इतने टाइम तक चला और इस एक्सेलरेशन पर चला। तो आप कैसे बताओगे ये इक्वेशन का यूज करके, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट, और s इज द डिस्प्लेसमेंट जनरली, बट इन अ वेरी नॉन जनरल टर्म और नॉन ऑफिशियल टर्म हम इसको डिस्टेंस भी बोल देते हैं। बट रिमेंबर इन योर क्वेश्चंस, इन योर एग्जाम, यू विल डेफिनेटली टेक s एज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ओनली, डिस्टेंस नहीं मान के चलोगे आप, ठीक है। v square is equals to u square plus 2as. This is the third equation of motion. These are the three main equations of motion. There are some other equations of motion apart from these, but that are not very relevant. You will be able to solve all the questions based on these three equations. ऐसा नहीं है कि इन तीन equations के अलावा कुछ और जो equations, कुछ equations हैं, but they are the shortcut equations. Okay, they are majorly shortcuts, but these will be sufficient. अगर आप इनको पढ़ लोगे तो भी आपको अच्छे से समझ आएगा. So third equation talks about the change in the
square of the velocity being equal to twice of the acceleration and the displacement of the particles. V square is equal to u square plus 2as. So if you will move the u square onto the left side, so it will become v square minus u square is equals to 2as. So change in velocity ka square, v minus u is what? Change in velocity, final minus initial. V is final velocity, u is initial. So change in velocity ka square will be equal to twice the acceleration of the particle and the displacement it has covered, 2as. Okay. Yes, definitely we'll do questions tomorrow. Lot of questions will no not like a lot like 100 questions हम नहीं करेंगे, but we'll do good amount of questions which will touch each and every topic and will give you the clarity. आपको क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी, जो भी अपने टॉपिक्स आज तक पढ़े हैं उन सब क्लैरिटी आ जाएगी. इक्वेशंस ऑफ मोशन पे स्पेशली फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जब तक आप क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई नहीं करोगे आपका उतना स्ट्रांगली इनहेरिट नहीं होगा. तो फॉर टुडे आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to go back and read these topics जो हमने आज डिस्कस करे, acceleration, average acceleration and non-uniform motion and uniform motion and the equations of motion. Just read them, just do very very simple questions with answers or with solutions which are there with you. Just go through them. Okay, and tomorrow we'll do the question practice in the tomorrow's class. Okay students. Okay, I hope many of you have understood the today's class. Asma Khatun is saying good evening sir. Good evening Asma. Okay, I hope you enjoyed today's class and जो भी topics मैंने बताए हैं सारे revise करके आना, ठीक है. In the next class we will be doing the questions and I want all of you to participate with the same level of enthusiasm that you have today, ठीक है. So nobody will give the excuse as sir question practice day है तो there will be low attendance or something. Okay, go through the notes. Okay, read NCRT and come back tomorrow. I'll see you everyone tomorrow. Okay, bye, all the best for your next class. Okay, bye everyone.